So in last class we had completed our power expression and we gave just two lines. We concluded that PC is independent of mu. लेकिन समझने की बात है what do we mean by this that PC is independent of mu. इसका मतलब ये है अगर हम मॉड्यूलेशन करते हैं इसका मतलब ये है now I have started speaking, please pay heed to my voice only, not your friend's voice. तो अगर हम मॉड्यूलेशन करते भी हमारा जो कैरियर पावर कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. व्हाट आई मीन टू से इज दैट इट विल ऑलवेज बी देयर विल ऑलवेज बी अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ पावर दैट विल बी वेस्टेड बिकॉज ऑफ द कैरियर बीइंग ट्रांसफर्ड. क्योंकि देखो हमारा जो मैसेज है वो किस में है, कैरियर पे सुपर इंपोज हो जाता है, लेकिन हमारा मैसेज एक्चुअली किस में है, जो साइड बैंड्स है. रिमेंबर दिस, our actual modulated signal, our actual modulated signal are the side bands. सारी कॉपीज डालना, ठीक है. Our actual जो हमारा modulated signal है that is this complete signal जिसमें carrier component है. आपको याद है हमने एक expression लिखा था AM के लिए. Can you just go to the expression very quickly? Expression भी जो ये जरा हमने AM का expression general expression लिखा था. S of AM इसमें एक कैरियर था, अपर साइड बैंड था, लोअर साइड बैंड था. हम ये कह रहे हैं एक्चुअल जो मॉड्यूलेशन का जो इम्पैक्ट है या जो इफेक्ट है मैसेज का वो किस पे है, साइड बैंड्स पे. कैरियर तो एज इट इज अवेलेबल है ना, इसलिए अपना क्वेश्चन वो आपने मानो इफेक्टिव का कैरियर सिग्नल जो यहाँ पे है व्हाट इज दैट, दैट इज AC cos of 2 pi FC, दैट इज एज इट इज. तो मॉड्यूलेशन का उस पे कोई इफेक्ट मतलब AM of t या AM उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं. दैट्स व्हाई योर पावर ऑफ कैरियर इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू. इसका मतलब अगर आप म्यू इंक्रीज करेंगे, म्यू ग्रेटर देन 1 लेंगे, म्यू लेस देन 1 लेंगे, म्यू का कोई भी वैल्यू लेंगे, पावर ऑफ कैरियर विल बी अ कांस्टेंट. You get my point? Now what do we mean by that is, say for example in the general expression आप यहां से कंटिन्यू करें, for no modulation that is mu is equal to 0. मतलब जब हम मॉड्यूलेशन करेंगे म्यू हम 0 करेंगे, म्यू 0 मतलब हो गया मॉड्यूलेशन नहीं हो रही, ठीक है. अगर कोई मॉड्यूलेटर है उसमें सपोज अगर हमारे पास म्यू का कंट्रोल है using a knob, although it is not practically like that. So if you make mu 0, that means carrier जो इनपुट पे आएगा आउटपुट पे क्या आएगा, वही कैरियर आएगा as it is. Understand and remember this point. We need some recapitulation, I understand, but I hope that आपने भी अपनी थोड़ी कुछ recapitulation कर ली होगी after a break of 1 week. Definitely you would have thought कि नहीं मुझे recapitulation कर लेनी चाहिए, और आपने I hope की हो. Those who you are vigilant enough for the class. But anyways, I will have 50%. So if I have a modulator जिसको मैंने इनपुट दिया एक कैरियर और एक मैसेज सिग्नल, अगर मैं कहता हूं म्यू के लिए 0 है तो S of AM of P will be nothing but only the carrier part. समझ आया? क्यों? क्योंकि जो मैसेज सिग्नल उसको मैंने 0 कर दिया है. So it is like मैं इनपुट कैरियर दे रहा हूँ, आउटपुट तो कैरियर ही आएगा ना. ये जो ये वाले साइड बैंड से तो ये 0 हो गए, बचा क्या, तो ऐसा नहीं है तो कैरियर. So if I say a signal before and after modulation will be same, the carrier signal before and after modulation will be same if mu is equal to 0. Is this the right statement? Yes. Now another statement is the carrier before and after modulation will be different if mu is greater than 0. Yes. मतलब अगर हम मॉड्यूलेशन कुछ करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि देखिए ये जो आउटपुट पे आता है ना आपका सिग्नल, हम कहते हैं ये असली जो आउटपुट पे आपका सिग्नल आता है हम कहते हैं ये कैरियर ही आता है, लेकिन वी नेम इट एस, मतलब S of AM of P का दूसरा नाम है कैरियर आफ्टर मॉड्यूलेशन. This is the carrier part, this is the message part,
and we call it the modulated signal, or at times आप कोई बुक देखेंगे ऐसे बोलती है कैरियर आफ्टर मॉड्यूलेशन, क्योंकि मॉड्यूलेशन होती किसकी है, कैरियर सिग्नल की। हम कैरियर सिग्नल की मॉड्यूलेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। इज दैट ओके? डू यू गेट माय पॉइंट? सो इस केस में जब हमारा म्यू 0 होगा, और इनपुट सिग्नल इज सेम एज आउटपुट सिग्नल। नाउ लेट्स सी, मैं आपको क्यों ये बता रहा हूँ, असली मकसद है असली पावर एक्सप्रेशन देखने का। क्या आप मुझे बता सकते हैं पीटी किसके बराबर होगा? वेरी क्विकली इवैल्यूएट एवरीवन। पीटी इज इक्वल टू व्हाट? व्हेन म्यू इज इक्वल टू 0, पीटी इज इक्वल टू, राइट, कम इन। दैट इज पावर इज इक्वल, ये तो हो गया आपका केस 1, दिस इज केस 1। केस 2, when mu is equal to 1, इस केस को हम बाय द वे अगर आप साइड में लिखें, we call it as critical modulation case। तो आज कॉपी तराव के खुद बेंच पर आज कॉपी तराव दूसरे खुद पढ़ी, मैं तरह कौन डिस्ट्रीब्यूट तलाई मुझे के पूछे तराव दूसरे यहाँ पे तराव दूसरे कॉपी को वापस Case 2, when you meet mu equal to 1, can you tell me the expression for the power? Pt is equal to B by 2 Pc, or I can tell it as 1.5 times Pc। ये दो कंक्लूजन्स इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्टकट में किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में मदद करेगा। Therefore, we conclude, या अगर आप इसको फिर से लिखेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Pt is equal to 1 times Pc लिख सकते हैं ना। Eyes on board please। ये वाला एक्सप्रेशन था Pt is equal to 1 times Pc, ये वाला एक्सप्रेशन Pt is equal to 1.5 times Pc। From this, can I conclude? ये आप देखिए, as mu increases from 0 to 1, as mu increases from 0 to 1, as mu increases from 0 to 1, total AM power increases by 50%. Total AM power, that is PT, increases by 50%. As mu increases from 0 to 1, total AM power increases by 50%. Okay? Total AM power increases by 50%. So we write from above, from this expression, we can write PC is equal to 2 by 3 times PT, which is equal to 0.666 times PT. And if I take the percentage of this, this becomes 66.66% of PT is wasted as carrier power. Why do I say this is wasted? आप बताइए, why do I say this is wasted? हाँ? देखो भाई, आगे कहीं आ जाओ, चलो उठो वहां से, इधर आ जाओ, उठो वहां से, इधर आ जाओ। वही तो बात करी थी, दोनों पहुंचोगे? ठीक। इस पॉइंट को फिर से समझना। तो ये समझ, तो ये समझ, क्या? Sincerity is this. Okay, I'll repeat very quickly this. देखिए हमने conclusion निकाला that PT is equal to, eyes on board please, don't write. PT is equal to 1.5 times PC. ये हमने निकाला, ये पता है ये कहाँ से निकाला everyone? ये पता है? अब यहाँ से मैं अगर PC का वैल्यू निकालूँ तो PC मैंने यहाँ लिया 3/2 को बन जाएगा 2/3 obviously PT. Now this is equal to 0.66 PT.
If I take the percentage of this is 66% of PT, right? You said? So इसका मतलब ये है कि पावर ऑफ कैरियर जो है, जो कैरियर में पावर कैरियर ट्रांसमिट करने में पावर कंज्यूम हो रहा है, that is nearly 66% power. Only 33% power is used to transmit what? No. Sidebands. 33.33% will be used to transmit sidebands, and 66.66% is used to transmit the carrier only. And we know that there is no message at all if there is carrier only. Message is in the sidebands. Remember this. Your message, आपकी जो message है उसकी जो significance है या message का जो I would say important छुपा हुआ है वो किसमें छुपा है? Sideband. तो इसका मतलब 66% of power waste कर रहे हैं. Isn't it better that we find a modulation scheme that suppresses the carrier signal and only transmits the sidebands? Isn't it much needed? Such a modulation technique is called as, so आप लिखिए, there is a need हाँ ओके इसको काट दो, इसको काट दे, इसको काट दो, लिखो mu equal to 1 is the most efficient case. Mu equal to 1 is the most efficient case. Very quickly, थोड़ा जल्दी लिखो. Mu equal to 1 is the most efficient case of power distribution. Case of power distribution for AM transmission. थोड़ा तेज लिखें. For AM transmission. But still wastes 66.6%. But it still waste करता है 66.6% of the total transmitted power. या transmitter power. It still wastes 66.6% of total transmitter power. मेरे को क्या मतलब मत देखो फ्रेंड, मेरा क्या मतलब still wastes 66.6% of total transmitted power. Full stop. This power is wasted because of the transmission of additional carrier which has no information in it. This amount of power is wasted because of the transmission of additional carrier which has no information in it. This is the biggest drawback of AM. This is the biggest drawback of. What do you mean by AM? What do you mean by AM? What do you mean by AM? I need a bit more confidence in saying AM. What do you mean by AM? Now there is something called as modulation efficiency. इसके साथ ही हम define करते हैं एक और term जिसका नाम है modulation efficiency. देखिए जरा next heading जल्दी से modulation efficiency. Modulation efficiency is given by neta. Modulation efficiency, next heading, very clear and bold, underline. It is given by neta. And neta is defined as, या नीटा को हम इवैल्यूएट कर पाते हैं, eyes on board please, sideband power divided by total power. बोलने का मतलब ये है कि आपका AM ट्रांसमिशन ज्यादा एफिशिएंट होगा अगर आपके साइड बैंड में ज्यादा पावर होगा as compared to anything else, right? Is that what we understand? So if it is possible for us to increase or decrease the sideband power, we can increase or decrease the efficiency accordingly. Is that the conclusion, right? So therefore neta को evaluate करने के लिए फिलहाल जो हम वैल्यू यूज करेंगे वो वही वाली यूज करेंगे जो हमारे पास है, PSB divided by PT. और PSB का बराबर आप साइड में लिखिए. We know PT is equal to PC 1 plus mu square by 2. PT is equal to PC plus PC mu square by 2. Where I can replace this by PC and this becomes the PSB.
So PSB is equal to this. You get my point? जल्दी से इसको लिखिए थोड़ा, बिकॉज लिखने का काम है, इसमें ज्यादा समझने की जरूरत कुछ नहीं, थोड़ा तेजी से लिखिए, थोड़ा तेजी से लिखिए, इसमें समझना कुछ ज्यादा है नहीं। One component becomes the carrier power, another becomes the sideband power. That's it. End of the story. Shall I? Now, if you substitute this thing here, then it becomes. I will just write the conclusion because this case में हमें solve करना important नहीं बल्कि conclusion important है. PT का तो बराबर है PC1 plus mu square by 2. यदि cancel out, if you solve, the final expression that you should reach to is mu square by 2 plus mu square. Therefore, your final expression, please remember this is again. इसका मतलब क्या हो गया? Important का मतलब क्या हो गया? अकलमंद के लिए इशारा है काफी। ये जरूरी नहीं एग्जाम में आएगा, आ सकता नहीं, जरूरी नहीं। मेरे पास बाद में मगर कोई नहीं आएगा, जो मेरे पास आएगा तो उसको झूठे पड़ेगा। सर इम्पोर्टेंट, दैट इज अ वेरी बैड। यू शुड ट्राई टू आस्क दिस इन क्लास, या जब भी आपको मौका मिले पहले ही। एट द टाइम ऑफ एग्जाम इज नॉट द राइट वे टू go to the teacher and discuss this, that. उससे पहले ही जो अच्छी बात मेरी बात नहीं। Okay, anyways, this is the conclusion. Okay, now you write analysis. थोड़ा सा analysis हम करेंगे, जरूरत नहीं है। Case 1, mu equal to 0. It means PSB is equal to 0% of PT. Mu equal to 0 मतलब हो गया कि साइड बैंड पावर कुछ होगा ही नहीं, बिकॉज म्यू 0 है तो वो तो खत्म हो गया होंगे ना दोनों। And PC is equal to 100% of PT, right? ये 0% ये 100%. Mu equal to 0.5 means, भाई तो यहाँ पे एक और चीज ऐड कर लो, नीटा कितना है? या ये लिखो साइडस, therefore नीटा is equal to 0. Is it visible? Yeah, it is exactly visible. Hanji. Yeah, this is case number 2. Mu 0.5 means that P side band will be approximately 11% of PT and PC will be 89% of PT. Therefore, neta is equal to 0.11%. Case 3, mu is equal to 0.707 means PSP is equal to 20% of PT and PC will be rest 80% of PT. Neta in such case will be 0.2. ये आप खुद evaluate करेंगे. I leave this to you to cross check, please. Mu equal to 1 means PSP will be at the max 33.33% of PT and PC is still how much? 66%. Neta is equal to only 0.33. Are you getting some conclusion out of this? क्या आपको conclusion मिल रहा है इससे? What can you conclude from this?
Exactly right. This is point number 1. That the maximum power we can attain or maximum efficiency is 0.33. ये तो एक point. Any other point? Any vigilant student here who is a good observer? Come on, there is a message on the board. Socho. Don't think I cannot be the vigilant student. I have not been in class. No. It depends on the moment. Then you're going to work now. No, this depends on us. We can keep it greater than 1 also. Shabash. Any student who has the बाकी क्या है? चलो ठीक है. एक important observation है. बहुत clear and crisp observation. Very nice. That's the answer. You see, there's a clear relation between the sideband power percentage and neta. 20.2, 33, 0.33. ये चाय 10 चम्मच सुधर Right. So do you get my point? So this means that the neta efficiency will vary almost very clearly with what we call as the sideband power. इसका मतलब आपकी जो हमने initially वो relation कही थी that neta is equal to sideband power divided by total power, that holds good. So your neta primarily depends on the amount of the power in the sideband. Is it clear? Any confusion? And one last one. You can see that you just write one point. PC is independent of mu. PC is independent of mu, and the share of the carrier power, but the share of the carrier power PC, what is PC? देखिए वो repeat किसने बोला रेजर है आपने? What is PC? PC क्यों है? Carrier power ना? What is PT? शाबाश. Total power. Actually मैंने इसलिए आपसे पूछा ये किसने बोला because I felt कि नहीं आप कहीं ना कहीं थोड़ा सोए भी हो. तो PC क्या है आपको पता होना चाहिए. हम आधे घंटे से यही बोलते हैं. Please देखा. ठीक है, no issue. PT is the total power. PC is the carrier power. ठीक है? मैं क्या बोला? मैं बोल रहा था. PC is independent of mu. But the share of the carrier power, in the total power, that is PC, but the share of the PC is independent of mu. Bracket में लिखिए constant. But the share of the PC, that is carrier power na, in the total power decreases as mu increases, but the share of the carrier power in the total power decreases as mu increases. किसी के ज़हन में कुछ क्वेश्चन आ रहा है? हाँ, सवाल आ रहा है कोई? अगर नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम है. एक सवाल आना चाहिए. I mean, just to elaborate on what I said, if your total power is 50 watt and your carrier power is 30 watt and your sideband power is 20 watt, say for mu equal to mu1. Now say we
increase mu1 to mu2. mu2 अब क्या है, mu1 से बड़ा. So your total power may now change to 60 watt, for example. But this quantity will remain as 30 watt. However, your sideband power increases to 30 watt. आपको समझ आया क्या होता है? Please, this is important illustration. इसको समझिए. आपका कैरियर पावर कांस्टेंट है जितना वो था. न्यू आपने न्यू इंक्रीज किया, आपका साइडबैंड का पावर बढ़िया रहेगा. कैरियर पावर विल बी एज इट इज. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ये 30 वाट है, 30 वाट ही रहेगा. टोटल पावर हालांकि न्यू बढ़ाने से टोटल पावर बढ़ गया, बढ़ेगा ना, नेचुरली बढ़ना चाहिए. लेकिन दैट इंक्रीज और डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ द साइड बैंड, नॉट इन टर्म्स ऑफ द कैरियर पावर. समझते तरह क्यों? क्योंकि उस पे तो म्यू का कोई इफेक्ट ही नहीं. दिस इज व्हाट वी मीन बाय म्यू. पीसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू. एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिखिए जरा. अब तक जो आपने पढ़ा सीखा. Question number 1 of your subject communication system. Very important one. लिखिए जरा क्वेश्चन नंबर 1. इधर लिखिए हेडिंग लिखिए न्यूमेरिकल्स. ये दिखना चाहिए वहां से न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो गए हैं. लिखिए हेडिंग न्यूमेरिकल्स. An unmodulated AM. थोड़ा जल्दी से लिखिए. I'll give you 10 seconds to read. An unmodulated AM transmitter power is given by 500 watt. Full stop. Find AM transmitter power. मैंने कहा an unmodulated AM power या an unmodulated AM signal power is given by 500 watt. What do you mean by unmodulated? Carrier mu0. मतलब इस टाइम अगर इनपुट कैरियर होगा, आउटपुट भी क्या होगा, कैरियर ही. So in a way it means carrier power. But this is the different way to twisted way to tell you that carrier power is this. आपको समझ आया? बिल्कुल नहीं समझ आया बस लोग. किसको समझ आया रेज योर हैंड. किसको नहीं समझ आया रेज योर हैंड. किसको नहीं समझ आया रेज योर हैंड. ओके, आई विल रिपीट. आई सेड इज एन अनमॉड्यूलेटेड AM पावर. अनमॉड्यूलेटेड क्या मतलब है? म्यूजिकल जीरो. या मैं कह सकता हूं ये कैरियर पावर है, क्योंकि म्यूजिकल जीरो के टाइम आउटपुट पे क्या आएगा, कैरियर ही आएगा. सो अनमॉड्यूलेटेड AM signal is nothing but the carrier signal itself. If you ever find that an unmodulated AM signal power is, so you should clearly mean unmodulated means carrier power. समझा तरह? तब ऐसे मुआवने में न्यूमेरिकल तरह की एस्टिमेशन की ट्रिकी लैंग्वेज तरह समझ. You should, when you read a numerical, ask yourself questions. What does this mean? इसका मतलब क्या है? ठीक है? So an unmodulated AM power is given by 500 watt. Find AM transmitter power. You have to find PT. Find AM transmitter power with 100% modulation. Find AM transmitter power with 100% modulation. Can you solve this? Just read it once again. जरा सब लोग एक बार पढ़िए, चाहे जोर से अंदर से. सब लोग जरा पढ़िए एक बार. सॉल्व करें जरा इसको. Eyes on board, please. Eyes on board. Eyes on board means eyes on board. When mu is equal to 1, sorry, in this numerical, you are given details for mu equal to 0. It is saying your total transmitted power is equal to 500. But when mu is equal to 0. So this actually means that PT is equal to PC 1 plus 0 by 2. And you find PT is equal to PC. Therefore, PT
का वैल्यू when mu is equal to 0 is 500. Therefore, PC is equal to 500. This is what you find out. Point number 1. Point number 2. Now, जो आपको actually ढूंढना है, you have to find PT for mu equal to 1. This is what you have to find. So when you write the formula, PT is equal to PC 1 plus mu square by 2. You substitute the value of PC from here because this remains constant. PC remains constant. So PC आपने हमने देखा ना इससे पहले, as mu changes, value of PC is always constant. So आप उठा के इसको सीधा यहाँ पे डाल देंगे 1 plus 1 by 2 and this is, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1.5 into 500 which is nothing but 750. Right? समझ आया? नहीं समझ आया? You have to revise now. This is up to your intellect. Beyond this, I cannot help. Board. Eyes on board. Question number 2. For an AM signal, total sideband power. For an AM signal, total sideband power is given by 100 watts with 50% of modulation. जब मैं कहूँ 50% of modulation, आप ब्रैकेट में वहीं पे लिख लीजिए mu equal to 0.5. Isn't that correct? Because we said that there is a relation between mu and neta, and when I say 50% modulation, it means mu is equal to 0.5. When I say 70% modulation, it means mu is equal to 0.7. When I say 100% modulation, it means mu is equal to 1. When I say 150% modulation, it means mu is equal to 1.5 and like that. For an AM signal, total sideband power is given by 100 watts with 50% of modulation. Full stop. Find total AM power. Find PT. I don't know. You just solve it. Find the total AM power. यहाँ पे given क्या है? पहली चीज mu is equal to 0.5. दूसरी चीज sideband power. So when I try to solve this, I know that my PSB is equal to PC mu square by 2. That happens to be, this is 100 watt. Units लिखेंगे आप जरूर, ठीक है? वरना न्यूमेरिकल में मार्क्स कर सकते हैं. PC लिखो तो आप. PC कितना आएगा सॉल्व करके? ठीक है, हमारा यहाँ शेयर इज 9 बताइए कि 0.5 into हाँ 0.25 सॉरी जरा देखिए आप. हाँ चलिए आएगा. Therefore your total power is carrier power plus sideband power. Sideband power is already 100. Carrier power you found out to be 800. So 800 plus 100. When units are same, you should write watts at the end. So your answer is 900. मैंने कहा दो न्यूमेरिकल.
टाइम क्या है? 10 के बाद हम बस करेंगे. Okay. Is it done? Right. Very quickly question. Question number 3. A carrier signal given as a carrier signal given as 10 cos of 2 by 10 raised to power 60 is AM modulated by a message signal given as 4 cos of, is it in the visible in the board? Yes. Is given as 4 cos of 2 pi. नहीं 4 cos of 4 pi लिखे आप, बाकी और कंफ्यूजन बढ़ेगी. 4 cos of 4 pi 10 raised power 3t with mu equal to 0.5 full stop. आ जाओ. याद रखना. Antenna resistance is equal to 5 ohm. Now the question begins. We will start with detail. Question 1. Lose the sound. Find all the parameters. Have I just started this? Yes. Find all the parameters of AM. By all parameters we mean you have to find AM, you have to find FM, you have to find mu दिया है, जो mu तो दिया है. You have to find bandwidth, you have to find DC. सुनो क्या क्या ढूंढना है भाई, क्या फायदा है बकवास करने से. इसके बाद आपको बाहर ही जाना है. यहाँ डाल दो. You have to find PP, you have to find PSV. जिसने न्यूमेरिकल कर लिया उसको सब कुछ समझ आ जाएगा. And you have to find finally meter. तो क्यों बोल रहे हैं? जमा को चलाना तो तैयार है. Okay, let's go for it. Okay, don't do it. Just listen to me now. अभी मत करे कोई. मेरी तरफ ध्यान दे. Anyone? Those who just now came, listen to me. This is a numerical, and listen to me. You will understand from here on. Shh. किधर फंस गए? Okay, let's do it, and let me show how it happens. Listen to me now. What is this carrier? This is the carrier. आप कुछ मत देखिए, बस देखिए, आप खुद सॉल्व करेंगे.
Your carrier is given by 10 cos of 2 pi 10 raised to 60, and you know your carrier C of t is generally given as AC cos of 2 pi FCT. You can see AC in this case is how much? 10 volts. And then you have cos is at, then you have 2 pi is at L. FC you can find from here. So your FC is equal to 10 raised to 6 hertz. Or I can say FC is equal to 1000 kilohertz. Okay? Now can you do the same analysis for this one? Do it quickly please. Do it quickly please. Did you get my point? No. It is all psychological. If you would have been able to control your psychology and would have revised, by the way. Yes. Have you revised? Not at all. You should have revised. If you had revised, you could have got this numerical here itself. Okay, now second thing is, this is point number 1. आपको AC मिल गया, FC मिल गया. Rather यहाँ पे मुझे AC और FC की लिखनी चाहिए थी. Now you know your M of t is given as generally AM cos of 2 pi FMT. In this case, where is the signal? कहाँ गया? ये. Your AM is how much? 4 volts straight away. Okay. Now your cos is as it is, your 2 pi is not as it is. So you can divide this by 2 pi. So what remains is 2. So FM is as it is. So it is like your FM is equal to 2 into 10 raised to 3 hertz, which is 2 kilohertz. So you got this in kilohertz, you got this also in kilohertz. This is good. You should follow same units. ठीक है? इतना हो गया, FM निकल गया, FC निकल गया. समझ आ रहा है ना? किसको समझ नहीं आ रहा है? Raise your hand. आपको समझ आप अभी आए? छोड़ो ना. अच्छा रहने दो. क्यों नहीं बोला साथ? Okay. Next point क्या है? New दिया हुआ है 0.5. What do I need to find next? Next क्या? Okay. Yes. Now make an arrow. Write bandwidth. Bandwidth of AM is how much? 2 times FM, if you remember. Well, how much is FM? 2 kilohertz. 2 into 2 is 4 kilohertz is your answer. What is the time? 10 minutes. So next point, carrier power PC is given as AC square by 2R, right? And this is 100 because 10 ka square is 100. How much is R? 5. Given in this case 5. Please remember, if R is not given, Zoa goes, if R is not given, you will take R equal to 1. What is R? R is antenna resistance. Okay. Now here it is given, so we take it 5. Therefore the answer happens to be 10 watts. Now what next? That is very easy now. PT is equal to PC, we know that in formula. 1 plus mu square by 2. Please solve it and the answer should be 11.25. So what is the value of PC? What is the value of PC? Anyone? 10. Sideband power ढूंढ लेंगे आप? Sideband power ढूंढ लेंगे आप? Total sideband power. It is equal to PT minus PC. ढूंढ सकते हैं आप वैल्यूज का भी? Then meter mu square by 2 plus mu square, right? यही है ना करने तक की फॉर्मूला खत्म हो गया. Is it done? I think that's over for today.